Summer Pack Allied School Class 7 Science. Activity 1. Structure of a leaf. Complete the boxes to name the structures that make up the leaf and describe the function of each part. ये है आपके पास वैक्स क्यूटिकल. फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन. ये पोर्शन है आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल. फंक्शन है हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O. स्ट्रक्चर पॉलीसेड मोसोफिल. इट्स फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. एयर कैविटी increases the efficiency of gas exchange. Stomata allow a plant to take in carbon dioxide. Guard cell with chloroplast regulate the rate of transpiration within plant cells. Transpiration. Use the information sheets to help you answer the question below. Surface of a leaf. Number of stomata per millimeter. Leaf 1 में आपके पास टॉप पे है 29 और लीफ 2 में है 32, लीफ 3 में है 38. आपने फाइंड आउट करना है मीन नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर 2. और मीन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को जो है वो प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 पे. हमारे पास आंसर आएगा 33. बॉटम पे है 263, 276, 250. तीनों को ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 263. Why are there more stomata on the underside of the leaf? वन बॉक्स टिक करना है. करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस द एवेपोरेशन ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स दैट ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा? गार्ड सेल्स. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रा वन लाइन फ्रॉम ईच प्रोसेस टू द करेक्ट एग्जाम्पल. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हाउ मिनरल आयंस मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट. Diffusion. How gases move between the leaf and the atmosphere. Osmosis. How water moves from the soil into the root. Evaporation. How water moves from cells into the air spaces. Question 5. Complete the sentences to describe how water moves up the transpiration stream. As water evaporates from the leaves, the concentration of water in the leaf cells decreases. This produces a concentration gradient that causes more water to flow up through the xylem in the stem to replace it. Question 6. For each scenario, tick one column to predict what will happen to the rate of the transpiration. Scenario क्या है हमारे पास? A fan is positioned so that it blows over a plant. Transpiration increases. A plant is not watered for a month. Transpiration decreases. A plant is moved into a dark cupboard. Transpiration decreased. Half of the leaves are removed from a plant. Transpiration decreased. Question 7. A plant is moved into a warmer room and the rate of transpiration increases. Explain why. Warmer temperature enhance metabolic activities. The warmer temperatures causes stomata to open wider, flowing for more water. Question number 8. Cacti grow in hot, dry environments. Explain how the cactus of cacti are different from plants that grow in cooler climates. These leaves have a waxy cuticle to prevent excessive water loss. The spines and fine hairs absorb and reflect excessive sunlight. Question number 9. When there is a drought, plants often wilt. This causes their leaves to curl up and hang down. Explain how this affects the rate of transpiration. When plants wilt due to drought, the stomata on the leaves close to prevent excessive water loss through transpiration. Activity 2. Photosynthesis. Use these words to fill in the gap. Carbon dioxide plus water. और ये क्या चीज़ बनती है? लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल यूज़ करके ये बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड टेक्स प्लेस इन लीव्स. ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. दिस मीन्स दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. They need simple things like carbon dioxide and water. Plants can make complete things like sugar, starch, fat and proteins. When plants
are in sunlight, they can make a sugar called glucose. The carbon dioxide get trapped in a chemical called chlorophyll. Chlorophyll is what makes the plant green. When plants use carbon dioxide and water to make glucose, there is a lot of oxygen left over. The respiratory and circulatory systems. एक्टिविटी 3 है हमारे पास. लेबल द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको बताया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में और आपने इसको डायग्राम को लेबल करना है. नोजल कैविटी, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकलस, लंग्स, एल्वेलाई, डेफ्रैगम. लेबल द पार्ट्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टियम, एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वाल्व, वेना केवा, राइट आर्ट्रियम. Label and draw arrows in the correct direction for the cardiorespiratory system. ठीक है, हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें. कैपिलरी बेड, pulmonary veins, aorta and branches, left atrium, left vertical, systematic arteries. Capillary bed, pulmonary arteries, vena cava, right atrium, right vertical, systematic veins. वो क्वेश्चन वाले हैं हमारे पास. What would happen to the intercostal muscles through doing aerobic activities? When you engage in aerobic activities, your intercostal muscles are subjected to repeated contractions and relaxation to facilitate breathing. Question 2. What are the valves responsible for in the heart? The heart valves are responsible for preventing the backward flow of blood. Activity 4. The immune system. Choose and take the correct options given in brackets. आपको brackets वाली चूज करनी है करेक्ट ऑप्शंस के इनमें से कौन सी है. The body's immune system is responsible for antibiotics, fighting या infection. तो infection. It is constantly working to keep your body healthy and free from antibodies, fighting the infection. It does this by producing antibodies, fighting infection antibodies, which fight infections that enter to the body. Fill up the numbers. आपको इम्यून सिस्टम के पार्ट्स बताए गए हैं, आपने इनसे देख के नंबर फिल करने हैं. सबसे पहले नंबर पर आपके पास ये है द टॉन्सल्स एंड एडिनॉइड्स. ये नंबर 4 है बोन मैरो. ये नंबर 5 है आपके पास द स्प्लीन. नंबर 2 द थाइम्स. नंबर 3 द लम्फ नोड्स. नंबर 7 पेयर्स पैचेस और नंबर 6 द अपेंडिक्स. एक्टिविटी 5. व्हाट इज़ द डिजीज़. आपने डिजीज़ के सामने बताना है कि एलर्जी है या MS है. ठीक है. इट इज़ एन. सबसे पहले हम ये पूरा अगर रीड करेंगे तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ. पार्ट 1 में है MS, पार्ट 2 MS, पार्ट 3 एलर्जी, पार्ट 4 एलर्जी, पार्ट 5 MS, पार्ट 6 एलर्जी, पार्ट 7 MS, पार्ट 8 एलर्जी, पार्ट 9 MS, पार्ट 10 एलर्जी, पार्ट 11 एलर्जी, पार्ट 12 MS, पार्ट 13 MS. Activity 6. Atoms everywhere. Test your knowledge. What is an atom? The smallest part of a substance that cannot be broken down chemically. Can atoms be seen with your eyes? Why or why not? We are not able to see it with our eyes because they are very smaller. How many atoms are in the human body? There are almost 7 multiplied by 10 power 27 atoms in the human body. What determines the atomic number of an atom? The atomic number of an atom is determined by the number of protons present in the nucleus of an atom. What can change depending on the number of protons in an atom? Adding or removing protons from the nucleus changes the charge of the nucleus and change that atom's atomic number. Label this picture of an atom. Nucleus, proton, neutron, electron.
Question 3. See if you can discover missing parts of this research table. Use the internet or a periodic table to help you. Element description, atomic number, mass. Element He, description helium, atomic number 2, 4.002. O, oxygen, 816. Au, gold, 79, 196.966. I, iodine, 53, 126.904. Na, sodium, atomic number missing at 22.989. Element Rn, radon, 86, 222. Once you have finished this table, answer the following questions. Which atom has the heaviest mass? Organism has the heaviest mass. Which atom has the most protons? How do you know? Organism, its atomic number is 118, which is highest atomic number. Research activity. Is there anything smaller than proton, neutron and electrons? Do some research and write down what you discover. Yes, there are smaller particles called quarks, and Kapchi's quarks are the building blocks of protons and neutrons, while lepton includes electrons and neutrons.